And now we will be learning one more scenario, very interesting scenario, in which we'll see that how an impairment loss is accounted for in the presence of a revaluation surplus in our balance sheet. Obviously, we know very well that revaluation surplus is an item which appears in the balance sheet as an item of owner's equity. Okay, so let's discuss a scenario on it. The scenario is that sample company is a company which is having a machine in its balance sheet with a carrying amount of 300,000. And this is the machine which was previously revalued, because we are assuming over here that the asset is being measured at revaluation model. Okay, so based on that, in the earlier years, the asset was revalued, leaving a revaluation surplus of 20,000. Okay, so this asset which is having a carrying amount of 300,000, asset की अपनी carrying amount 300,000 है, इसके साथ ही एक revaluation surplus आपको नजर आ रहा है 20,000 का. हुआ क्या, ये asset impair हो. अब इस asset की जब impairment हुई तो वो इसकी recoverable amount रह गई 275,000. 275,000 की recoverable amount का मतलब क्या है कि you have a loss of 25,000 as an impairment loss. Up, just notice there are few figures that should be in your mind. There was a revaluation surplus of 20,000 appearing in the books of accounts against the asset that has been impaired with an amount of 25,000. So 25,000 is an impairment loss of an asset which was already revalued, upward revalued, giving a surplus of 20,000. Accounting क्या होगा? इसका accounting treatment ये होगा कि accumulated impairment loss तो credit होगा 25,000 से, जैसा हमने learn किया हुआ है. Asset में से minus करने के लिए उसको 25,000 से credit करेंगे, लेकिन अब उसका डेबिट सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रहा. सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करेंगे ना 20,000 से, और ओवर एंड अबव जो 5,000 होगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डेबिट होगा. इस तरह करने से आपकी रीवैल्यूएशन सरप्लस को पहले खत्म करना बहुत जरूरी. मींस उसी सेम एसेट, रिमेंबर सेम एसेट, वो सेम एसेट का रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर अपीयर हो रहा है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उस सेम एसेट के रीवैल्यूएशन सरप्लस को पहले डेबिट करके खत्म करें. फिर अगर आपका इंपेयरमेंट लॉस फिर भी उस रीवैल्यूएशन सरप्लस से जायद है, दैट जायद अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एज एन एक्सपेंस, एज ए लॉस फॉर दैट पीरियड. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था रिगार्डिंग इंपेयरमेंट ऑफ एन एसेट विच इज ऑलरेडी हैविंग अ रीवैल्यूएशन सरप्लस. Thank you.